welcome back to my channel. For today's video, I'm doing a makeup tutorial after 6 to 8 months. It's been a long while and I really hope you guys miss me, but अगर नहीं भी किया है तो I'll make sure next time आप miss करो because I'm gonna put some amazing content for you guys. Since it's the wedding season, I am sure you guys will be needing some inspiration. I'll try and share with you guys different looks in the coming videos which you guys could refer to. And without much ado, let's get started. So I'm gonna start with Embroylisse moisturizer, which is very hydrating and it's perfect for the winter season because मेरी skin को बहुत ज़्यादा hydration चाहिए होता है. So I'm using this. थोड़ी सी expensive है, अच्छे प्राइस में मिल जाएगी तो आप definitely ये check कर सकते हो because it's really good. अच्छे से moisturize करना स्किन को because आप मेकअप लगाओगे तो वो थोड़ी dry हो जाएगी. So make sure your skin is well hydrated. Next step is to use a facial oil क्योंकि अभी winters है तो फेशियल ऑयल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपकी ड्राई स्किन है. जैसे मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, अभी मेरे यहाँ पे भी पैचेस आ गए हैं. सो फेशियल ऑयल इज़ अ मस्ट. सो आई एम गोना यूज़ अ फेशियल ऑयल नेक्स्ट एंड दिस इज़ द कलरबार सेल्यूलर ड्राई ऑयल. मुझे पता नहीं था कलरबार के कुछ प्रोडक्ट्स इतने अच्छे होंगे. ये बहुत अच्छा है. इट्स नॉट स्टिकी एट ऑल. नेक्स्ट स्टेप इज़ टू यूज़ अ प्राइमर. नाउ अगर आपके पोर्स हैं नहीं है आप तभी भी प्राइमर यूज़ कर लो बिकॉज इट क्रिएट्स अ बैरियर बिटवीन योर स्किन एंड मेकअप. तो जो भी मेकअप है वो स्किन के अंदर नहीं जाएगा. एंड जस्ट आफ्टर यू अप्लाई योर ऑयल एंड मॉइस्चराइजर वेट फॉर 2 मिनट्स ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए एंड देन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ primer. I'm using the Benefit Porefessional. I use the littlest amount. I'll start with the eyes today. I'm using the concealer in the shade 20 Cent. So I'll spread it with a very light hand. Now we'll start with the eye makeup and I'm going to be using this palette by Milani which I received in the PR today. Let's start with this dusty rosy shade and I'm going to blend it in my crease. कोई भी एक ऐसा blending brush लेके आपको इसको यहाँ पे लगाना स्टार्ट करना है जहाँ सॉकेट होता है और उसको ब्लेंड करते रहना है. सर्कल लेके राउंड सर्कुलर मोशंस में. नेक्स्ट I'm going to take a brush like this which again is a blending brush but थोड़ा छोटू blending brush है. Taking this shade, I'm going to focus this shade in my crease. बैक एंड फोर्थ जाऊंगी और ब्लेंड करूंगी. Then I'll take this silvery shimmer and finger से काफी अच्छा लग रहा है. Almost all the pigments give the best color payoff with fingers. So I'll apply it in the center only. And this is a very simple look. हर कोई इसको कर सकता है. I have kept it very simple. कुछ complicated नहीं कर रहे हम. बहुत simple है. अगर आपको ये 2-3 कलर्स भी नहीं लगाने, सिंपली एक पिंक कलर लो, वो लगाओ और बीच में ऐसे थोड़ा सा सिल्वर तो सबके पास होता है. Next step is to use a darker brown. I'll define the outer part and then try and make a inverted V. Basically आपको socket close करना है. Now we are left with the brow highlight. I'll go back to this shade. So I'm highlighting the brow bone. Now to add a different element to this very simple eye look, I'm going to do a green eyeliner using my angled brush. I'm going to take this green. Simply अभी मुझे eyeliner की तरह इस green shadow को apply करना है. And I'm gonna add my falsies. और उसके लिए I have this very reasonable eyelash set by cellular. I'll again keep the link in the description. I'm gonna put these on and we'll get back. I have my lashes on and before moving forward I want to talk to you guys about these amazing body lotions by Mamaearth. So I have the vitamin C body lotion with vitamin C and honey and the Ubtan one with turmeric and coconut butter, and I'm gonna be applying the vitamin C one
because I have this habit of applying lotions here and there, especially in this weather, because I do get flaky skin as I mentioned earlier. So I'm gonna be applying this. It has a beautiful fragrance and doesn't feel greasy at all, not sticky, and it just makes your skin soft and supple. And the best thing is, all the Mamaearth products are free from harmful chemicals. They are made up of all natural ingredients. Also, it is an Indian brand which is plastic positive. So if you wish to check out these body lotions, you can always use my discount coupon code, which is Arshiya 2021 for 20% off at mama.in, and you can shop from the links in the description. You can also download the Mamaearth app, wherein users get early access to sales and discounts. I've already cleaned the fallout from the eyeshadow. Now I'm going to do the waterline. I'm going to be applying this white pencil by Forever 52. अगर आपकी छोटी eyes हैं तो आप white pencil लगाओगे तो वो थोड़ी open up हो जाती हैं. अगर आप काजल लगाओगे तो वो थोड़ी और छोटी दिखती है. लोअर लैश लाइन का आई शेडो मैं बाद में करूँगी, एंड आई एम गोना स्टार्ट विद कलर करेक्शन. सो आई एम गोना यूज माय फेवरेट कंसीलर पैलेट बाय फॉरएवर 52. इसके मेरे पास दो शेड्स हैं. दिस इज AC002 और एक ऑरेंज शेड आता है विच इज AC003. स्टार्ट अप्लाइंग हियर. जहाँ पे भी आपको थोड़ा ब्लैकनेस लगे, ग्रेनेस लगे, टैनिंग लगे, एक्ने मार्क्स हो, हाइपर पिगमेंटेशन हो, सब जगह इसको अप्लाई कर लो. सो दिस स्टेप विल इंश्योर दैट यू डू नॉट गेट ग्रे अंडर आइज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है यू डायरेक्टली अप्लाई द फाउंडेशन विदाउट डूइंग कलर करेक्शन और आपके डार्क सर्कल्स होते हैं, आप उस पर फेयर शेड का फाउंडेशन लगाते हो तो इट टर्न्स ग्रे, और जो आपके अंदर का नीचे का जो डार्कनेस होती है वो दिखती है उसके थ्रू. इसको पहले हम कलर करेक्ट करना. नाउ यू कैन सी वो जो डार्कनेस थी वो चली गई है. नाउ एवरीथिंग इज इवन. फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग द Loreal infallible 24-hour matte cover. When I first tried it, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था. I thought this is extremely dry for my skin, but this is amazing. Very full coverage and it looks beautiful in pictures. And I'm in the shade 101.5 natural ivory, which is a tad bit light, but it works for me. So I'm gonna be putting some on the back of my hand. Coverage इसकी ज़्यादा है और थोड़ा सा matte है, so I'll use my beauty blender. Look at that, how beautifully it blended. Do not forget your neck. जो भी exposed areas हैं, excluding the arms, बैक पे हो चाहे स्टमक पे हो, थोड़ा सा लगा लेना चाहिए, otherwise it looks odd. Now this is a coverage with just one pump and it's amazing. और मैं ज़्यादा highlighting नहीं करूँगी, highlighting concealer नहीं use करूँगी. I would rather use this one by Sugar in the shade Cappuccino. ये मेरा नॉर्मल शेड है ऑन द डेज व्हेन आई नॉट फील लाइक डूइंग कलर करेक्शन, और मैं सिर्फ इसको अप्लाई करके इट कवर्स माय डार्क सर्कल्स वेल. Okay, now for the lower lash line, I'm gonna take this shade. I'm gonna go back to the green that we did. For contouring my face, I'm going to be using the Nykaa foundation stick in the shade 07. Use a flat foundation brush. I'll use a cream blush. It's my favorite, Flower Beauty. Again, I'll put some on the back of my hand. Smile. No, I need loads of blush इस लुक के लिए स्पेशली, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा लाइट रखा है सब, तो थोड़ा ब्लश ज़्यादा लगाएंगे. I'm going to be using this one by Sugar, which is all said to go translucent powder.
जैसे कि आज मैंने कोई हाइलाइटिंग कंसीलर यूज़ नहीं किया है, तो मैं उसके बाद ये यूज़ कर सकती हूँ टू गेट अ लिटिल हाईलाइट अंडर माय आईज। And I'll keep it for 2-3 minutes and then I'll dust it off. Now next step is to set the contour and blush with powder. Next I'll use this illuminating blush. So I'll use this highlighting shade on my nose, this upper lip. I look all shiny and blingy and we are only left with the lip. And I'll be using the Retro Matte Mini by Pack. This came in a pack of 4 shades.